चलिए, Assalamu alaikum everyone. First of all, I welcome you all in the free demo class of content writing on the platform of Digital Skill Center. सबसे पहले जो है बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास मैं आप सब लोगों के साथ जो है डिजिटल स्किल सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, सो दैट आप जो है इस ग्रुप को लाजमी जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि इधर आप लोग हमारे तमाम स्टूडेंट्स की जो है वर्किंग्स वगैरह उनके असाइनमेंट्स वगैरह जो है ना वो यहीं सबमिट करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये कोर्स जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी के साथ ऑफर करते हैं, तो आप जो है ना इस ग्रुप के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड भी हमारी पोस्ट वगैरह देख सकते हैं, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स ने जो है ना वहाँ अप्लाई भी किया हुआ है, वो हमारे साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनके असाइनमेंट्स वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। विजिट कर सकते हैं ग्रुप को। तो ये ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन कर लें। आफ्टर डेमो आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा। नो मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर, तो मैं आप लोगों के साथ डिजिटल स्किल सेंटर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप इससे भी यहाँ भी हमें फॉलो कर लें, ठीक है। और इधर आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, अमेजोन वी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ अबाउट डिजिटल स्किल सेंटर। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर हम 4 मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, अमेजोन वीए और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज हैं। तमाम के तमाम कोर्सेज हम लाइव ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और एंड विद अर्निंग अपॉर्चुनिटी श्योरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ हम 1800 प्लस स्टूडेंट्स को जो है अपने कोर्सेज के अंदर इनरोल कर चुके हैं, उनको सिखा चुके हैं, जो कि हम हमसे जो है ना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन ले चुके हैं और अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट कर चुके हैं। नो मूविंग टूवर्ड्स वेबसाइट ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर, तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना वेबसाइट भी शो हो रही होगी डिजिटल स्किल सेंटर की, तो इसका यूआरएल और लिंक मतलब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। तो आप इधर जो है ना लाजमी तौर पे जो है वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो ये कुछ इंटरफेस का शो हो रहा है, जहाँ आपको कोर्सेज, कैरियर प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजिंग, ऑर्गेनाइज क्लासेस वगैरह मिलती हैं, मेंटोरिंग प्रोग्राम डिजाइन विद केयर, आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डिजाइन इन हाईली प्रोफेशनल वे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। 1800 स्टूडेंट्स को इनरोल कर चुके हैं अभी तक, ये 4 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। कुछ रिव्यूज वगैरह सेटिस्फाइड लर्नर्स जिन्होंने हमसे सीखा है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ऑलराइट जी। नो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपकी मेंटोर मिस शाइश हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको जो है होस्ट करने जा रहा हूँ, सो दैट आप अपने डेमो को प्रॉपरली जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो मैंने आपको होस्ट कर दिया है। आफ्टर डूइंग सम सेटिंग्स आप जो है वो डेमो को कंटिन्यू कर सकती हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the demo class of content writing course on the platform of Digital Skills Center. I am Binte Shaish and I will be your trainer and your mentor for this course, which is being offered to you entitled as Content Writing on the platform of Digital Skills Center. Before moving forward, let me introduce myself to you. I'm Binte Shaish and I have been working as a content writer in the freelance industry for more than 5 years. I've been working as a website content writer for more than 6 years now. Currently, I am working as a content editor in Trilogics. I've worked with national and international industries all across the globe, which deal with content writing and designing. So I have an experience and the knowledge that you would be needing in order to succeed in your career as a content writer. Other than that, I'm a blogger, a trainer, and a writer. So we would be having a wonderful journey together. So this entire course is divided into 4 modules. So हमने इस course को design किया है 4 modules में, different modules में, और हर module इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी नीड्स जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको रिक्वायर्ड होंगी,
in order to learn freelancing, and in order to practice it, and in order to do it practically on the platforms, so that you people may find it easy and interesting as well. So आपको engage रखने के लिए और आपकी needs को पूरा करने के लिए इस content को हमने इन 4 modules में divide किया गया है. Let's see what is inside these modules. So our first module is how to write a well-researched content. Basically, whenever you are given any task by your client, the first thing that they notices about your content is how well formatted it is and how well your content is being researched. Now, आप में और उन 90% लोगों में जो चीज डिफरेंशिएट करती है आपको, that is how authentic your content is, how unique your content is. Because content writing is something that everyone these days is trying to do. It's one of the demanding skill. So आप में और उन बाकी लोगों में क्या differentiate करेगी चीज? It is how you have presented your content and how well researched, authentic and unique your content is. इस चीज को समझते हुए जो हमने अपना पहला मॉड्यूल रखा है, that is about all these things. It would let you people explore all those possible tools and all those possible strategies which would help you people to write a well-researched content, a well-formatted content, a content that is presentable and unique at the same time. So हमारे इस पहले मॉड्यूल में, which is the basic one, आपको सिखाया जाएगा how to write and how to perform researches in order to write a well-researched content. Once we are done with that, we will be moving towards our next module. So हमारे next module को डिजाइन किया गया है वेबसाइट कंटेंट की तमाम नीड्स को सामने रखते हुए. वेबसाइट कंटेंट क्या होता है? In order to understand that, let me share something with you. We call it the anatomy of website content. So that's an anatomy. It means when you dissect something, जब आप किसी चीज को डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो चीज बज़ाहिर आपको टैंक टॉप्स, गेमिंग लैपटॉप या ट्रेंडिंग गेमिंग लैपटॉप्स के टॉपिक के अंदर आपको जितनी भी रिसर्चेस नजर आती हैं, वो रिसर्चेस इस तरह टॉप पे क्यों आई हुई होती हैं और उस तमाम कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है जो उन्हें टॉप पर लेकर आती है. तो ये वेब पेज के एनाटॉमी आपको ये चीज समझने में हेल्प आउट करेगी. सो द फर्स्ट थिंग इज द URL. How do you put a URL in your content? आप अपने content में इस तरह के links कैसे generate करते हैं? Keyword की research कैसे करते हैं? How do you write the meta descriptor? How do you write the headers and titles? And if I would tell you, Google never reads your entire content. It scans your content and it starts with the heading. If your heading and your title is not optimized, Google would reject it. So आपका लिखा गया content website accept ही नहीं करेगी. So you would be learning how to write optimized headings, how to write the body copy, how to add, excuse me, am I audible to everyone? Can you please confirm everyone if I'm audible to you people? You can raise your hands as well and write down in your chat boxes if I'm audible to everyone. Thank you, Komal. All right, thank you very much. Okay, so where were we? Basit, I would recommend you to please, rejoin us. Sometimes it happens. आप rejoin कीजिए session को and then you would clearly listen to me. You'd be able to listen to me clearly. ठीक है? Okay, so how to write those meta descriptors. Meta descriptors जो छोटी सी details दी जाती हैं आपको content के बारे में, जब आप content पे click नहीं कर रहे, उसे open नहीं कर रहे, तो उससे पहले उसकी description आपके सामने आ जाती है. We call that meta description. So how to write optimized meta descriptions, how to write the body copy, how to add videos, how to add the call to action buttons. All these things make up an entire content on the website. So website पे लिखा गया content, जब तक आप उसमें ये तमाम essentials add नहीं करते, वो website का content नहीं बनता. So how would you be able to do that? All these things would be taught to you people in the second module.
how to design website content. So हमें now we know that how to write a well-researched content, how to do the formatting of the content, and what to add inside a website content. Once we are done with that, we would be moving towards the fundamentals of SEO content writing. Now, what is SEO? Search engine optimization. It is one of the famous ones, one of the famous thing in content writing, the skill that is in most demand these days. ऐसा क्यों है? Now that we are on the website, तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि वेबसाइट पे हर वो कंटेंट जो कि ऑप्टिमाइज है, जो कि रैंक्ड है गूगल पे, वो एसईओ कंटेंट कहलाता है, यानी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कंटेंट कहलाता है. गूगल का सर्च इंजन ने उसको स्कैन करके उसे प्रूफ कर दिया है दैट इट इज वन ऑफ द टॉप कंटेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने इसको अपने टॉप पेजेस के ऊपर रैंक किया हुआ है, राइट? सो जब तक हमें उसकी फंडामेंटल्स का नहीं पता, जब तक हमें नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीजें हमने अपने कंटेंट में ऐड करनी है सो दैट हम एसईओ राइटिंग कर सकते हैं, तब तक वी वॉन्ट बी एबल टू राइट एन ऑप्टिमाइज कंटेंट. इस चीज को समझते हुए वी हैव एडेड दिस थर्ड मॉड्यूल into our course content, so that once you know that you have written a well-researched content and you have designed a website content, a website copy, by applying these basics and fundamentals of SEO content writing, you would be able to write a content that is completely optimized, right? So we are done with all these things. हम थोड़ा सा advanced level की तरफ अब move कर गए. SEO content writing में हमने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है, हमने उसमें कीवर्ड रिसर्चेस करनी है, और हमने उसको इतना जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर देना है कि वो जो बिलियंस ऑफ कंटेंट लिखे गए हैं गूगल के ऊपर, उनमें से हमारा कंटेंट यूनिक रहे. सो हाउ वुड यू बी एबल टू डू दैट? You'd be able to do that by understanding the basics and fundamentals of SEO. This module is going to be a bit lengthy, and we would be working on off-page SEO. Once we are done with all these things, तो हम जाएंगे blogs की तरफ. Now you must all know what is the blog. Blog is somewhat we call it as our second business. So जब हम content writer के तौर पर establish कर रहे होते हैं in the freelance industry, तो साथ ही साथ हम एक ऐसी source of income generate कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ हमारे personal essence के लिए होती है. Blogs allow us to do so. Blogs are, you know, you make your own website and then you upload content, you add content into it. Again, the content should be optimized. So your blogs, for example, after 6 to 10 months, अगर आप अपने blog के ऊपर काम करते हैं, उसमें add करते हैं optimized content, तो ये आपको एक बहुत ही significant income generate करके देना start कर देता है, ठीक है? So after we are done with the basics and fundamentals and we have all the knowledge to write about website, तो हम अपनी website पे काम करना start करते हैं blogs के through, right? So हमारा चौथा module आपको इस काबिल बनाएगा that you'd be having your own website. We will start with the free websites first. जब आप handy हो जाएंगे अब website पे ऊपर काम करने के लिए, website content से सारी essentials जब आप समझ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फ्री वेबसाइट्स पे, देन आप अपनी वेबसाइट परचेज कर सकते हैं. इट इज ऑप्शनल ऑफ कोर्स, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. हमारी ट्रेनिंग आपको उसके लिए चार्ज नहीं करेगी, लेकिन आपको सिखा दी जाएगी ऑल दी स्किल्स सो दैट आप एक अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें. Then we would be moving towards one of another trending content writing type, which is academic articles. Academic articles अपने नाम से आपको बता रहे हैं that is something related to education. So academic articles लिखे जाते हैं in the form of by following a standard format जो कि universities follow करती हैं, जो कि colleges follow करते हैं. So आप लिखते हैं उन researchers के लिए जो अपनी research conduct करते हैं but they don't have the skill of writing. In order to publish their content, वो आप जैसे रिसर्चर्स को ढूंढते हैं अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग फाइवर पे और बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, एंड दे आस्क यू पीपल टू राइट कंटेंट फॉर देम, टू राइट एकेडमिक आर्टिकल्स फॉर देम, राइट? एंड फॉर दैट आपको $600 तक, $800 तक की पेमेंट ऑफर की जाती है, विच इज अ वेरी गुड ऑफर, राइट? सो एकेडमिक आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, कौन से फॉर्मेट हमें फॉलो करने हैं,
academic article की sources जो हैं वो बहुत ज़्यादा has to be well researched. All the sources should be from academia. All the research sources should be authentic. So वो कौन सी sources हमने follow up करनी है, कैसा हमने कोई standard format follow करना है, all these things will be taught to you in our this module, how to write academic articles, right? So once we are done with the formatting, we are done with the researching part. Now that we know how to design a website content, how to write for websites, what are the things that we should add, what is the basics and fundamentals of SEO content writing, and how to write your own blogs, how to write academic articles. Once you have all these basic skills, then we would give you a training that would help you people to go into the freelance industry and earn. Okay, so हम आपको Upwork से related training provide कर रहे हैं. Why? Because Upwork is the largest platform and it is considered as most authentic one. So how to attract clients on Upwork, कैसे काम करना है, proposals किस तरह से लिखने हैं, cover letters में क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, resumes कैसे बनानी है, कैसे presentable way में आपने अपनी offer अपने client तक लेकर जानी है in a way कि वो आपकी offer को consider करे, you would be taught in this last part of the course. Okay, so आपको हम basic से start करेंगे, advanced तक लेकर जाएंगे, and then हम आपको self made बनाकर इस course का इख्तिताम करेंगे. That would be our entire module. Okay, I'm revising it for all those people who have joined us late. We have divided our entire course into 4 modules. We start with the researching part and the formatting part. Then we move towards writing a content for the website, learning the basics and fundamentals of SEO, writing blog posts, and generating our own websites for that matter, writing academic articles, and the training that would help you people to approach clients on Upwork. Okay, that would be our entire content course outline syllabus. Now, what is content writing? Content writing is us communicating ideas through the digital network. अब content writing क्या होती है? It is जब आप digital media और digital audience के लिए content create कर रहे होते हैं. Now, this includes you writing the content, processing the content, editing the content, and publishing the content in a digital format. So आपने लिखना है, आपने edit करना है, publish करना है उस content को digital media पे उस audience के लिए जो कि digitally present है वहाँ पे. That content can include the blog posts, podcast scripts, etc. You can write ebooks as well. You can write press releases as well. You can also write social media copies under this title of content writing. So this is entire concept of content writing. Now this is one of the question कि SEO क्या होती है? SEO, search engine optimization, एक process है basically. It's the process by which you write the content in a way that it is ranked on the first pages of the search engine, like Google. Mostly we consider Google, of course. So your content should have those keywords which Google is in search for. Your content must have those unique things that Google is looking for. Unique in a sense that certain topics are touched by you that nobody has ever touched them yet, or they are written in a way that is quite unique. So SEO हमें सिखाती है कि कंटेंट के अंदर कौन से कीवर्ड रिसर्चेस को हमने टारगेट करना है, कौन से कीवर्ड रिसर्चेस हैं जो हमारे कंटेंट को सबसे टॉप पे लेके जा सकते हैं, वो कौन सा कंटेंट लिखने का वो कौन सा वे है, वो कौन सा तरीका है जो कि हमारे कंटेंट को बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ आपके पास SEO की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप वेबसाइट के ऊपर लिखे जाने वाले कंटेंट के लिए ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते. गूगल आपके कंटेंट को बहुत जल्दी
11th 12th पेज पर ले जाएगा जहां पे कोई सर्च नहीं करता. सो इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ तो आप एक ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो कि ज्यादा देर तक गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर क्रॉल करता रहे. ठीक है, उसमें ऐसे कीवर्ड्स हो जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हो, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का हो कि वो तमाम उन क्वेश्चंस और क्यूरीज को आंसर कर रहा हो जो कि आप ढूंढ रहे हैं, या आपका व्यूअर ढूंढ रहा है, या आपका रिसर्चर. सो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करूं जो कि विंटर्स के लिए कपड़े बनाते हैं या विंटर्स के लिए रिसोर्सेस बनाते हैं. सो जो चीज मैं चाह रही हूँ वो मेरी इंटेंशन है. अब आपका लिखा गया कंटेंट अगर मेरी इंटेंशन के साथ मैच करता है तो आपको गूगल पर ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएंगे. आपने वो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं जो कि मेरी इंटेंशन के साथ मैच कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा. इट सीम्स क्वाइट कॉमन एंड इजी थिंग्स बट इट इज नॉट, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. सो ये तमाम टेक्निकल चीजें आपको इस मॉड्यूल में सिखाई जाएंगी. जब आप सीख जाते हैं तो आप अपने कंटेंट को सबसे टॉप पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. राइट, इट वुड बी इजी फॉर द क्रॉलर्स, जिसको हम वेबसाइट स्पाइडर्स कहते हैं. आपके कंटेंट को वो ढूंढ सकते हैं और फिर उसे रैंक कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट एसईओ इज, एंड इट इज मैजिकल ऑफ कोर्स. There are so many types of content writing. There's blogging, that's articles, there's social media posts, there's email writing, and that's technical writing. So आप किसी भी एक टाइप को टारगेट करते हैं. आप इन तमाम टाइप्स को एक ही वक्त में टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम ये तमाम स्किल्स सिखा देंगे. इन तमाम कंटेंट राइटिंग की जो टाइप्स हैं, blogging, articles that can be academic or website, social media posts, email writing, or technical writing. Now, people usually confuse कि भाई content writing को ही हम क्यों चूज करें. Because अगर आप किसी और स्किल की तरफ जाते हैं, if you have of course an intention of writing something और आपके पास स्किल है राइटिंग की, तो आप किसी और स्किल की तरफ अगर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है और बहुत लिमिटेड होती है. कंटेंट राइटिंग would offer you opportunities which are never ending. You can work as a blogger, you can work as a copy editor, you can work as a freelancer, you can work as a ghost editor, you can work as a dog writer, you can work as a creative director or consultant. Because कोई भी इंसान जो कि बिजनेस भी स्टेब्लिश कर रहा है वेबसाइट पे नीड समथिंग टू राइट. जब तक वो लिखी गई कोई चीज प्रेजेंट नहीं करेगा वेबसाइट पे तो उसकी ऑडियंस जनरेट नहीं होगी. सो यू आर नीडेड बाय एवरी सिंगल पर्सन हु वांट्स टू राइट एंड वर्क ऑन द वेबसाइट. सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर नॉट गोइंग टू एंड एट ऑल. दिस ब्रिंग्स मी टू दैट क्वेश्चन जो कि आज बहुत फेमस है. इट्स अबाउट एआई. सो कहा जाता है कि एआई हमारी कंटेंट राइटिंग की जो इंडस्ट्री है उसको डोमिनेट कर देगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स. मैं खुद एक ब्रांड पे काम करती हूँ विच इज स्कार्फलिंग्स. इट्स अ यूके बेस्ड ब्रांड. वहां पर आई मैनेज द कंटेंट, एंड बहुत सारा कंटेंट मेरे पास पूरे दिन में आता है जिसे मुझे मैनेज करना होता है, और वो हम सब करते हैं एडवांस टूल्स की मदद से. टूल्स सब काम करते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग, बट until and unless मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं कमांड नहीं दे सकती उन टूल्स के ऊपर, वो टूल्स किसी काम के नहीं है. राइट, सो इफ यू डोंट हैव दिस स्किल, आपके पास बहुत अच्छे टूल्स भी होंगे तो वो किसी काम के नहीं है. सो योर स्किल, कंटेंट राइटिंग स्किल, इज not going to extend any sooner. Okay, so this is the skill, it's going to last. What if I don't want to work as a freelancer? Is there any scope for a content writer in an on-site job market? Of course, there are so many possibilities. Let me share your possibilities. Yes. Okay. मेरे सामने एक वेबसाइट है, एंड इंडीड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी सीवी सबमिट कराते हैं और वो लोग जो कि आपको हायर करना चाहते हैं वो आपको अपनी ऑफर्स भेजते हैं. ठीक है, विद इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो ये एक ब्लॉगर और आर्टिकल की बेसिक सैलरी है पर मंथ, अगर वो काम करना चाहता है किसी ऑन साइट जॉब पे. राइट, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं.
आप देख सकते हैं, फिगर्स आपके सामने हैं। सो अगर आपको लगता है कि एज अ बिगनर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कंटेंट राइटर बनना, अपवर्क के ऊपर काम करना, क्लाइंट्स को, फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करना, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस स्टेब्लिश कर सकते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, देयर आर so many other cities, they offer jobs as a content writer. So if you have the skill, you can work on on-site jobs and on the off-site jobs as well. Okay, इसी तरीके से you can go and check out the website Glassdoor, LinkedIn. There are so many other opportunities which are daily created for people who have the good skill. Now that we're moving towards the end of our presentation, there is one of the things that you should know, which is you all need to explore your passion. And by passion, I means what is your expertise? What are your expertise? What do you think that you're good at? ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आप लिख सकते हैं, नॉन स्टॉप लिख सकते हैं, जिसके बारे में आपको रिसर्च करने में प्रॉब्लम नहीं है, जिसके बारे में लिखने में, पढ़ने में, बात करने में आपको अच्छा फील होता है, एंड you don't get bored of it. So you have to find that niche of yours. जब आपने उस नीश को टारगेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी को पेट इंडस्ट्री बहुत पसंद है, कोई पेरेंटिंग पे बात करना चाहता है, कोई सोशल इश्यूज पे बात करना चाहता है, सो आप अपनी नीश को ढूंढते हैं सबसे पहले। जब आप अपनी नीश को ढूंढ लेते हैं, उस पर आपको बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स भी लगती हैं, लेकिन एक दफा आप जब स्टेब्लिश कर जाते हैं अपनी नीश को लेकर, तो इट पेज यू ऑफ, राइट? जब आपने अपनी नीश स्टेब्लिश कर ली, अब आप रिसर्च करेंगे कि आया वो नीश आपकी ट्रेंडिंग है या नहीं है। अगर आप उस नीश पे लिखते हैं वेबसाइट पे, तो क्या आपको पे बैक मिलेगा? अगर आपकी नीश ट्रेंडिंग है तो ऑफ कोर्स आप लोग जाएंगे और उस नीश पर काम करेंगे, अगर नहीं तो आप उसकी वेरिएशंस तलाश करेंगे। बट वर्किंग for something that you like is very important for you to survive and to enjoy and to love your job. Okay, once you do that, people look out for you. Platforms, they look for people like you who are enthusiastic and love what they do. There are certain queries and questions that people ask about content writers or content writing industry. Number one is how to do SEO, as this is the future of content writing. So we use tools, we understand the algorithm of Google, how does it work. हम देखते हैं कि किस तरह से कंटेंट को हमने इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च को कीवर्ड को रिसर्च करना है, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं. सो दैट्स हाउ बाय अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल्स हम एसईओ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी कंटेंट की, और फिर हम अपना नाम बना लेते हैं अपने कंटेंट राइटिंग की नीश के ऊपर, राइट? 98% ऑफ द ट्रैफिक जो जनरेट होता है कंटेंट का, वो उस कंटेंट से जनरेट होता है जो कि सबसे टॉप पे रैंक है. तो टॉप पे रैंक करने के लिए एसईओ को समझना और उसको करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू वुड लर्न दैट. Tools to craft, design, write, or publish content as a freelance content writer. Would there be any tools? Yes, there are millions of tools, paid and free, both. So we would be teaching you about there are so many tools which you are going to learn in this course. How to approach clients, cover letters, proposals, etc. Social media presence कैसे maintain करनी है, proven strategies आपको सिखाई जाएंगी, catchy proposals किस तरह से लिखने हैं, market analysis कैसे करनी है. You would learn all these things with us. Okay. And there are other sources other than Upwork. आप देख सकते हैं कि Upwork पे हमारे पास कितनी सारी jobs आ जाती हैं. Upwork का इंटरफेस आपके सामने है. अब तक इतनी जॉब्स विद इन few minutes ये जॉब्स जो हैं ये आ चुकी हैं related to content writing, related to SEO content writing, and they need people who can write, and this is the kind of budget that they offer, $300 for that kind of work. So there are so many possibilities. All you have to do is to learn the skill and then use it. Okay. Now I'll leave that to you people. If you have any questions, you can let me know.
Thank you very much. Join me for the interactive content writing session to work on all those skills in detail. And I hope to see you all. Remember, the best kind of investments are the ones that you do on yourself. Thank you very much, people. And I'm going to unmute Sir Hamza in case he wants to talk to you people. And I'll be taking your questions as well. तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की मैं जो क्यूरीज वगैरह होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके आंसर कर दूं। हमारे पास 5 से 6 मिनट है, बाकी आप मैम से जो है क्वेश्चन आंसरिंग कर लें जो भी आपके कोर्स से रेलिवेंट है, ठीक है। तो वो आपको आंसर कर देंगे एट दी एंड। हमारे इस कोर्स की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2000 रुपीज़ हमारे इस कोर्स की फ़ी है। जो आपने सबमिट किस तरह से करवानी है, तो उसके लिए आपने जिनसे लिंक लिया वो हमारे ऑफिशियल फ्रेंचाइजर्स हैं। वो आपके साथ जो अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे, जिसमें जैज़ कैश, इजी पैसा और एचपीएल के अकाउंट है। तमाम अकाउंट के टाइटल्स मोहम्मद अशरफ के नेम से हैं। जो एचपीएल के अकाउंट के टाइटल है वो मोहम्मद अशरफ के नेम से है, एफ उसमें मिसिंग है, ठीक है। तो आप किसी भी अकाउंट पे अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और जो ये है हमारी एडमिशन्स ओपन, वो 28 नवंबर तक ओपन है, ठीक है। तो सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं, ठीक है। 28 नवंबर के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपनी फीस सबमिट कर दें। अभी कर दें तो बेटर है, सही है, नहीं तो कल या परसों तक आप अपनी एनरोलमेंट हो दैट आपकी सिक्योर हो जाए, सीट आपकी सिक्योर हो जाए। तो आप अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। 1 मंथ ड्यूरेशन का ये कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको ये जितना भी मैम ने कोर्स कंटेंट आपको बताया है, इवन आपके साथ आउटलाइंस फ्रेंचाइजर्स ने शेयर की होंगी, ठीक है, जिनसे आपने लिंक लिया, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ आपको सिखाएंगे, ठीक है। और साथ अपवर्क फ्रीलांसिंग भी हम सिखा रहे हैं इसके अंदर आपको, इस कोर्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये ही आप लोगों के आई थिंक क्वेश्चंस थे। और अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी के साथ ये हमारा कोर्स होता है, और आपको ड्यूरिंग कोर्स भी मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट होती है, और आफ्टर कोर्स भी आपको मैम की 3 मंथ्स तक व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगी। और जो हमारी एफबी के ग्रुप की सपोर्ट है, वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट हम देते हैं, ठीक है जी। तो टिल नाउ इतना ही, सही है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।